integration, it is also impacting our performance, right? When we are using XML-based processing, correct? So now, how to create the annotations? Majorly, first thing we need to specify what is the target when we are creating an annotation. Target tag is used to specify what type of annotation is used. So अभी यहाँ पर यदि if you will go and come to see in my particularly class here, if you will see I have one annotation which is nullable. Here the target element is nothing but the field, correct? और यहाँ पर देखेंगे retention, what is when you will want it to apply. So retain the information. Basically, it's this processing at the runtime. So this annotation is used for methods. Oh, sorry, it basically for fields, not for fields, right? So like this, you will specify. So there are some annotations which you can use for fields, some annotations you can use for a method, some annotations you can use for a class. Now, coming back to, so basically what we do, we create that some particularly, uh, first we will explain retention. So retention policy source means refer to the source code discard during the compilation, correct? So at the time when we are processing, right? So it will not be available in the compiled class. Now there is a class, right, available in the Java compiler, but not for Java, correct? So runtime refer to some things runtime available to a Java compiler and the Java, correct? So majorly you need to understand what you are using it for. Dot class file available to a Java compiler. So majorly it is for compile time, correct? Now, if you will see, there is a so few points you need to remember when you are creating any annotations. So method should not have any throws clause here, correct? Method should return one of the following, either primitive data types, string, class, enum, or whatever it is. When we are creating an annotation, and method should have any parameter, right? Which should attach at the rate just before the interface keyword to define the annotation. So at least one parameter होना चाहिए. It may assign a default value to the method. You can also assign the default values as well. So these are the some of the points we need to. So Maisha should not have any parameters. We should attach at the rate before the interface and should not have any throws clause. And this method should return at least one of the value. And you can also assign some default values. So let's go to अब हम Eclipse में जाने और यहाँ पर let's say कि एक आपने इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है is nullable. तो राइट ये हम फील्ड के लिए क्रिएट कर रहे हैं और इसका जो रिटेंशन पॉलिसी है एट द रन टाइम. तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बात की है, राइट, जो रिटेंशन पॉलिसी के लिए इट कैन बी ऑइदर क्लॉज मे बी रन टाइम और सोर्स. तो अभी हम इसको रन टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे. तो बेसिकली इज नलेबल. So we will use for at the rate on one particular field. So I will just one what we can call is here we also use a reflection also. ठीक है, तो मैं क्लास और इस मल्टीप्लिकेशन के पर्टिकुलर फील्ड में व्हाट आई एम डूइंग इट मल्टीप्लाई. ठीक है, इंट रिटर्न. ठीक है, सो समथिंग. अब इस रिजल्ट के बेस पे हमें पैरामीटर्स यूज करने हैं और मे बी इस पर्टिकुलरली ये रिजल्ट के लिए तो इस नलेबल वी कैन यूज. अब हमने इस नलेबल यहाँ पर जो इंटरफेस बनाया हुआ है, करेक्ट, यहाँ पर हमने इसको एट द रेट इंटरफेस दिया है, कोई पैरामीटर नहीं है और ये एक बूलियन रिटर्न कर रहा है, करेक्ट. तो इस
मल्टीपल वैल्यू इज इक्वल टू correct. Like this, you can use this annotations for this particular uh, parameter or for this particular thing, like this. अब क्या ये annotations can will you be able to use it at the class level also, right? So you see, right, is disallowed for this location because we have already told them this is basically used for only for methods. Oh, sorry, for fields. आप यहाँ पर भी आप डालोगे तो देन स्टिल यू विल गेट सम एरर, करेक्ट? तो ये हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एनोटेशंस है ये एनोटेशंस ओनली फील्ड के लिए डिजाइन है, राइट? अब ये मल्टीप्लिकेशन को हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर भी एक पब्लिक स्टैटिक void main, right? Now what we are doing it here, string, करेक्ट? अभी जस्ट इसको हम टेस्ट कर रहे हैं पहले इस क्लास के मेथड्स को, करेक्ट? एंड सिस्टम and what we are doing is plus pj dot, करेक्ट? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड, करेक्ट? अभी इस नलेबल यहाँ पर हमने इंटीजर के लिए यूज किया, एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड वे बिकॉज ये जो इंटीजर की वैल्यू कभी भी नल और नॉट होगी, तो बट फिर भी हमने इसको यूज किया हुआ है, बट विल ट्राई एंड सी कि कैसे हम उसको यूज करके एक्सप्लोर करेंगे, राइट? अभी ये जो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बेसिकली जीरो आ रहा है क्योंकि हमने इसकी मेथड कॉल ही नहीं की। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई थ्री रन एज चालू, तो अभी आपके पास में रिजल्ट मिल गया, करेक्ट? अब ये इस पर्टिकुलर कोड को हम कमेंट कर, अब हम एक बार नया क्लास डिजाइन करेंगे, एनोटेशन प्रोसेस, इसमें एक और मेथड हम लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज अ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम, how you wanted to get information basically about that particular class कि what are the fields है उसमें, if you wanted to change some details at the runtime for a particular class, आप रिफ्लेक्शन के बेस पे रिफ्लेक्शन को यूज करके आप कर सकते हो, उसमें कितने फील्ड्स हैं, कितने कंस्ट्रक्टर हैं उस पर्टिकुलर क्लास में, करे किस फील्ड की वैल्यू क्या है, एवरीथिंग यू कैन गेट इट यूजिंग द रिफ्लेक्शन, right? So what we do it, how you can use that particularly reflection, correct? So that is nothing but we need to use a simple, तो अभी ये जो ओबीजे है
This obj is nothing but we are multiplication. अब हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन सो व्हाट वी डू, अभी सिंपल कोड है, इसमें कुछ obj यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है हम, इसके साथ ही हम इस पर्टिकुलर क्लास का भी एक एनोटेशन बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, एंड obj वन डॉट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। नाउ हियर वी विल चेक दैट हाउ मेनी मेथड्स आर देयर और इज देयर एनी फील्ड्स। तो यदि यहाँ पर कुछ मेथड्स उसमें हैं तो वी कैन टेक दैट एंड प्रिंट दैट। फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं यूजिंग द रिफ्लेक्शन। So you can get that all the methods get class and class dot get. So you will get out dot intelligent. अब यहाँ पर you can get that name of the method also, right? Name plus this term get name. Even you can also get the modifier plus method modifier. So what is the reflection here, right? How you can get that information about the class and how you can process, right, at the runtime using the reflection, correct? So dot get back. अब ये यहाँ पर आपको मिल गए। इसी के तरीके से you can also get the fields, ठीक है। So if you will get the fields, उसमें जो भी fields हैं, correct? java.lang.view here. अब ये जो fields हैं, हम वो फील्ड्स भी पहले प्रोसेस करेंगे कि एक्चुअली फील्ड का नेम क्या है और उसका भी डॉट के नेम, फील्ड का नेम क्या है, लाइक दिस। नाउ लेट्स रन इट। अब इसको हम एक बार बेसिकली लेट्स चेक दैट फर्स्ट द रिफ्लेक्शन हियर हाउ इट इज वर्किंग, राइट? सो मेथड नेम मल्टीप्लाई modifier 1 weight equals to string has code notify or else. All these methods are basically you are getting, correct? So like this you will get all these methods, right? अभी इसमें ये सारे methods तुम्हें मिल रहे हैं जो इस क्लास के हैं और ऑब्जेक्ट क्लास के methods भी यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, प्लस आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है वो भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, राइट? सो व्हाट वी डू, अभी देखो नॉर्मली हमने यहाँ पर इसके बाद में जब आपने प्रोसेस किया हुआ है, राइट, यदि यहाँ फील्ड की इंफॉर्मेशन है तो फील्ड की इंफॉर्मेशन भी तुम्हें दिखाई देगी। अभी यहाँ पे फील्ड की इंफॉर्मेशन कुछ भी प्रिंट नहीं होगी, करेक्ट? अभी लेट से कि अभी जो हमारा इज नलेबल है, इज नलेबल यहाँ पर बूलियन वैल्यू है, जो हमने मल्टीप्लीकेशन जब यूज किया है तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखी है, करेक्ट? अभी हम इसको करेक्ट। नाउ अगेन वी विल रन द एप्लीकेशन प्रोसेस।
Okay, 1 minute, guys. I guess there is something we need to check it for. So like this, you can start processing and then you can start get the details about your methods for your what we can call as all these फील्ड्स एंड मेथड्स हियर करेक्ट. अब यदि आपको क्लास लेवल के और बाकी सारे एनोटेशंस भी उस तरीके से क्रिएट करना है, अभी हम देखेंगे कि वो एनोटेशंस अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एनोटेशंस यूज हो सकता है. आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अभी एक और हमने कैलकुलेशन करके नाम से एक क्लास बनाया हुआ. सो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पर हमने दो अलग अलग, एक तो मेथड लेवल के लिए भी यूज किया हुआ है. यहाँ पर हम कैलकुलेटिंग एन एरिया और दो अलग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं. तो लॉग एग्जीक्यूशन टाइम जो है ये एक एनोटेशन है जो फील्ड लेवल का है. करेक्ट. ये लॉग एग्जीक्यूशन टाइम जो है यहाँ पर यदि देखोगे तो ये हमने इसका जो एलिमेंट टाइप है मेथड है रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम है. करेक्ट. और इसमें दो मेथड्स हैं, एक मैसेज है, एक एग्जीक्यूशन टाइम है. डिफॉल्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग मेथड. अभी ये जस्ट हमने पर्पसली एक जस्ट सैंपल के लिए बनाया हुआ है. यू कैन ऑल्सो चेंज एंड यू कैन डू सम चेंजेस. So there is a two parameters you are passing when you are using at the rate log execution time here. तो यदि कैलकुलेशन में यदि आप आओगे, करेक्ट, so you can come and calculation here and you will see basically we are passing some value here as a calculation. So number of parameters you are passing in annotation is like how many methods. अभी आपके इसमें is message is a one method, execution time is another method. Like this you will have a different methods जो आपको यूज करनी है when you are creating in this annotations here. करेक्ट. तो फिर से लॉग एग्जीक्यूशन टाइम एक बार आप चेक कर सकते हो. करेक्ट. अब यदि इसी लॉग एग्जीक्यूशन टाइम में मैं एक और मेथड ऐड कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, राइट, लेट्स से पैरम नेम. ठीक है. तो ये पैरामीटर भी यू कैन पास इट. अब ये जो पैरामीटर है यहाँ पर आप आ जाओगे तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, एक पैरामीटर और पास करना है. पैरामीटर इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप, राइट. सो जो पैरामीटर है दिस इज वी आर यूजिंग एज अ लेट्स से की फॉर चेंजेस. ठीक है. अब इसको हमने इस मेथड के ऊपर यूज किया हुआ है. कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया को बेसिकली जस्ट हमने लेंथ और उसके लिए यूज किया हुआ है. अभी सिंपल उसमें हम कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे. करेक्ट. तो इस पर्टिकुलर लॉग एग्जीक्यूशन टाइम का इस पर्टिकुलर लॉजिक से कोई लेना देना बेसिकली इस लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है. राइट. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है. करेक्ट. द एनोटेशन प्रोसेसिंग इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम दिस लॉजिक विच वी आर डेवलपिंग हियर. मतलब इस लॉजिक से उस एनोटेशन प्रोसेसिंग का लॉजिक कंप्लीटली डिफरेंट है. ठीक है. तो अभी हमने तीन पैरामीटर पास कर दिए. अब इस लॉग एग्जीक्यूशन टाइम को हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलरली हाउ वी आर यूजिंग दैट लॉग एग्जीक्यूशन टाइम. तो अब हमने क्या किया है कि पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया एक नया एनोटेशन प्रोसेसिंग क्लास में. और वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन क्लास, राइट, जिसमें हमने मेथड लिखी है. यहाँ से भी हम ये पर्टिकुलरली पब्लिक स्टैटिक मेन को हटा देते हैं बिकॉज इट्स जस्ट फॉर टेस्ट. तो हमारे पास में अभी हम कैलकुलेट एरिया को हम यूज कर रहे हैं. राइट. अब कैलकुलेट एरिया को हम प्रोसेस करेंगे. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब हम पहले चेक कर रहे हैं कि इज दैट एनोटेशन प्रेजेंट ऑन एनी पर्टिकुलर मेथड जिसमें लॉग एग्जीक्यूशन टाइम है. तो हम उसी मेथड के लिए हम प्रोसेस करेंगे और उस मेथड को बेसिकली हम इन्वोक करेंगे. करेक्ट. सो 4 and 5 जस्ट वी आर पासिंग इट. करेक्ट. अब यदि मैं यहाँ पर मेथड नेम का भी एक वो लगा सकता हूँ, राइट, और समथिंग यू कैन यूज लाइक दिस डॉट
get name, right? Dot equals or contains. Like this, you can also do. This is also you can do and you can process it, right? तो ये भी एक लॉजिक आप वहाँ पे यूज कर सकते हो गेट नेम, क्योंकि जो जितने भी मेथड्स हैं थ्रू रिफ्लेक्शन वी विल गेट इट, करेक्ट? तो हमने रिफ्लेक्शन को पहले जस्ट चेक किया हुआ है। अभी यहाँ पर यदि आप बात करोगे तो ऑलरेडी अब आपको जिस मेथड के ऊपर हमने एनोटेशन यूज किया लॉगिन, उस मेथड को हम इन्वोक करेंगे, राइट? एंड वी विल गेट द रिजल्ट, राइट? तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा एंड देन बेसिकली वी विल प्रोसेस द रिजल्ट, ठीक है? अभी ये जो स्टार्ट टाइम है एंड टाइम, राइट? अभी जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम हमने जस्ट ट्राई टू प्रोसेस करने के लिए हमने जस्ट यूज किया उसको, करेक्ट? एंड इफ यू वांटेड टू गेट द एनोटेशंस यू कैन यूज द मेथड डॉट गेट एनोटेशन, right? So you will get the annotation here, and you will say annotation dot get message, correct? जो भी annotation का message है, correct? And here what you can do once you are getting that annotation dot, उसका यदि आपको time चाहिए तो you can get the execution time, right? And you can compare something like that, you can try it. अब यहाँ पर कुछ यदि लॉजिक लिखना है तो what we can do, log execution time का जो execution time है, राइट? इसको हम लोग इंटीजर करेंगे। अब ये जो इंटीजर है अभी यहाँ पर बेसिकली हमें जस्ट चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एरर आएगी। अब ये इसलिए एरर आएगी कि अब ये एग्जीक्यूशन टाइम वी आर पासिंग इट, लेट्स से 20 होना चाहिए, ठीक है? अब इस एग्जीक्यूशन टाइम को हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वल टू इस नॉट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 20, यदि अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो पर्टिकुलरली टाइम है, किसका टाइम, जो यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है, राइट? सो लेट्स से हम यहाँ पर टाइम टेकन इज इक्वल टू एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो एंड टाइम माइनस हमने स्टार्ट टाइम कर दिया, करेक्ट? अब एंड जो टाइम टेकन है वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा, तो पहले हम इसको प्रिंट कर देंगे, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, करेक्ट? टाइम टेकन टू प्रोसेस कैलकुलेशन, ठीक है? टाइम टेकन टू प्रोसेस द रिजल्ट इन मेथड। अब इस मेथड को कितना टाइम लगा है, basically this is the way you can check that if you wanted to check some performance optimization and you wanted to manually you wanted to do, so you can call the method and you can check that before the calling the method what is the time and after the completing of this method. So like this system dot current time in milli, system dot current time in milli, you will get a time taken. So this time is basically how much time we are taking. तो अभी हमने क्या किया है कि बेसिकली यू आर गेटिंग दैट, अभी हम यहाँ पर इस एनोटेशंस में जो वैल्यू हमने कॉन्फ़िगर की है वो भी हमें मिल जाएगी, करेक्ट? सो व्हाट आर द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज तो हमने कॉन्फ़िगर की हुई है, राइट? अभी यहाँ पर भी हम प्रिंट कर रहे हैं एनोटेशन मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसका टाइम टेकन प्रोसेस कर रहे हैं, right? अब हम क्या करेंगे कि इफ इट इज टाइम टेकन, जो एग्जीक्यूशन टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यदि एग्जीक्यूशन टाइम, राइट, आपके टाइम टेकन से ज्यादा है, राइट, उस केस में हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, राइट? टाइम एग्जीक्यूशन इज एक्स्ट्रा टाइम, टाइम टेकन, right? Like this. So like this you can just take it up and then you can just run it. तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि it is basically time taken to process the result is method is 0. अभी we'll see
एक्स्ट्रा टाइम टेकन, यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन टाइम है ये तुम्हारे टाइम टेकन से ज्यादा है। एक्चुअली इसको हमको ऐसा लेना चाहिए, राइट? इफ इट इज राइट, इस टाइम टेकन इज एग्जीक्यूशन टाइम, यदि तुम्हारे टाइम टेकन से, तो देन वी विल से so this is the way you can see how you can compare and you can use it, right? अभी ये जो टाइम टेकन है मेथड का, यहाँ पर जो हमारे को टाइम मिल रहा है, इसके अलावा then whatever time we are using it, so in that scenario what we are doing it, annotation dot execution time is basically we are using and comparing with the whatever time we have completed. Like this you can also check the methods and fields, right? And you can process that if there is this particular field as an annotation or not, right? So you can also check that, right? Dot is annotation present, उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर भी कोई एनोटेशन प्रेजेंट है क्या? तो इज नलेबल करके हमने एक क्लास बनाया था इस कैलकुलेशन के ऊपर, करेक्ट? तो कैलकुलेशन में इफ यू विल गो एंड इफ यू विल सी इज नलेबल, right? So we will come that here annotation processing, and here we will say dot yes, correct, and we will say if. So we can also do and check it if you wanted to uh, use like this, ठीक है? तो इस ये जिस फील्ड के ऊपर ये एनोटेशन हमने यूज किया है, एंड देन वी कैन प्रिंट इट फर्स्ट थिंग, डॉट प्रिंटलन, ठीक है? एंड वी विल से फील्ड नेम, एंड हियर वी विल से फील्ड, करेक्ट? Java application. So field name is getting printed, calculation dot result, right? You will see. So if you will see, the field is public field, and here is also you will see that field name is result here, like this, correct? तो इस particular field के ऊपर हमें you can also get that what is the annotation, right? Dot get annotation, right? So you will get the annotation also. So what will be the annotation here, right? And null check like this, correct? And here you can get the value, right? So what type of annotation it is, and you can also get that what we can say the particularly a value. So what is the value we have configured? So again, system dot out dot ten. So null check dot, ठीक है? Like this. So annotation value which we have configured, right? Like this. Now again, we will run it. So annotation value is true. So is nullable is true like this. So we are checking the value is basically is true here. So you can use this value and you can process it whenever you wanted to basically check it, correct? So if you wanted to get that value of how you can check that
we are saying that is nullable is true, correct? So we can also say, let me just again check it for that, what we can call as, if you wanted to do something like that, so you can compare if the value of the field is null and comparing with this, the value, if it is null, then you can otherwise throw an exception, right? So as of now, if you will take it up, something we can call as uh, to a result. So this result is as of now is, so let's take it up into annotation processing, and we will also try, right? So string, and we will say the name of that particular field is field name is equal to this field dot get name. So you can also get that value of the particularly field here. Okay. So if this field, the value of the field is null, then you can check that, and is nullable is true. Then you can throw an exception saying that this cannot be a basically a null here. So this kind of a logic you can write it here, right? You can get the value of the field. Okay. So what we can say, okay, like this. So you can write the logic here, right? And this logic will be a something like that, correct? So what is happening here? Again, if, right, null check dot value, right, dot equals, true. Okay. And if it is true, then यदि ये true है, and then if you will check it again, if particularly result of field name is, or that particularly field value, correct? So here you can write the logic. If field value is null, right? Then what is happening here? Is null. So is nullable, we are saying it's true, right? So then there is a is nullable, it is if you are making as a true, means is nullable, it's okay. If you are making as a false, then basically we need to use that field values false, correct? Then throw an exception. So this is the basically we can write it, right? Why I'm saying, if you heard of it, have you seen that bean validation where you use at the rate not null, correct? Right? At the rate max, at the rate mean.
These kind of annotations you can design for your, correct. So like this, you can specify these annotations and you can check the fields whenever you are processing it. So this is the basically example like a not null attack. We have taken the name as a null check, but you can check it as a not null or nullable. Like this, you can make it the method name, so it will be much more significant. And you can create that, use this annotation into different places. Correct. Execution time we have just taken up, right? Here you can also use some other method name and different purposes you can use the annotations of it. So if you really like it, basically this particular video, you can definitely share it and provide comments. What is your opinion about this topic? And you can tell exactly where and which are the places you will use your custom annotations. And what will be the purpose you will use the custom annotations and where you will use it in the project development. And you can also provide the comment saying that how this @query in your Spring Data GPA works. Or maybe you can use that how you can say mean and max validation works. So that is also you can provide.